Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Arafats from FEI Higher Secondary Institute. I am again with chapter number 17, 9th biology, and the chapter is prevention of drug abuse. In this chapter, today we discuss about the characteristics of drug addiction. What are the characteristics of drug addiction? Characteristics of drug addiction. इसके लिए एज अ टॉपिक भी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग एडिक्शन. जो ड्रग एडिक्टर होता है उसमें कैसे कैरेक्टर्स आ जाते हैं. हमने देखा when he or she becomes have habit of taking that drug, and it is his or her regular and constant manner. In that case we say that first one that हमने देखा इसमें our powering of desire of taking drugs. इसमें हमने देखा उस एडिक्टर में ज्यादा तलब अब रहती है. He now desires more and more dose of that drug. अब ये ज्यादा कंटिन्यूसली इस पे भरोसा रखता है. अब इसकी ये आदत बन जाती है और इसमें ये ओवरपावरिंग, अब इसमें ज्यादा डिजायर पैदा होती है ज्यादा लेने की. तो दूसरा इसमें क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग एडिक्शन में, ये एडिक्टर day to day after a time and time it increases the tendency of dose. That means tendency of increasing of dose. जो डोज होता है, जो क्वांटिटी होता है, ड्रग क्वांटिटी, वो ये अब ज्यादा लेना शुरू करता है. इसकी ये टेंडेंसी आती है. और हमने देखा अब ये बिल्कुल इस ड्रग के ओर जो ये रेगुलर तौर पे लेता है, इसने एक हैबिट बना लिया. अब ये एक साइकी बन जाता है इसके ओर. जनरली इट इज फिजिकल, ऑल द फिजिकल हेल्थ depends upon this drug. Now easily the effect of drug is on that person who is the addictor of that drug. That means a psyche बन जाता है. It becomes psyche of that drug and general dependence. आप ये पूरा generally physical dependence, ये physically तौर पे भी physically dependent on that drug. उसमें हम देखते हैं आप इसमें ये एक साइकी बन जाता है, ज़हनी इसकी परेशानी रहती है. He becomes mentally disrupt, he keeps mental affection with taking the drug, and physically its body parts also he also have a physical affection. Now his body parts look like the fatigue, थकावट महसूस करती है कि ये चाहता है कि मुझे ये थकन, ये जो एग्जॉस्ट हो जाता है, ये जो इसका जो टायर्डनेस है, थकावट है, थकन है या एग्जॉस्ट है या कोई कुछ डिट्रीमेंटल प्रेशर है, वो ये इसको ये लगता है कि इसको मुझे ये चीज सब चीज
मतलब जो मेरी थकावट है, जो मेरे मतलब मुझे थोड़ा स्ट्रेस में हूँ, ये मुझे रिड्यूस हो सके इफ आई टेक दिस टाइप ऑफ ड्रग। नाउ its body parts also remains dependent on that type of drug and is now a psyche। और फोर्थ इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक आता है, a drug addictor has a bad impression on society। Now it affects individually, other people's are not now with him or her, they don't have affection with that drug addictor। ये कैरेक्टर इसमें डेवलप होता है। अब ये सोसाइटी में भी जलील होता है, सोसाइटी में भी इसके वैल्यू नहीं रहता, इसका स्टेटस नहीं रहता है। दैट मीन्स द डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल। इसके सोसाइटी में रहने से मतलब सोसाइटी में रहने से दिक्कत वाली बात आ गई, परेशानी वाली बात आ गई। अब इंडिविजुअली इससे खतरा महसूस होते हैं और सोसाइटी तौर पे भी इसका खतरा महसूस होता है, क्योंकि ये जहनी आप डिसरप्टर रहता है। ड्रग्स लेने से आप इसमें जो मेंटल वो रिटार्डेशन आती है। दिस इज द इल इफेक्ट ऑफ टेकिंग द ड्रग, दैट इज detrimental effects on individuals। इसका इफेक्ट रहता है detrimental effect on individuals and on society। These are all that about the characteristics of drug addiction। If a person is a drug addictor, what characters automatically comes off with him by having this type of habit of taking the drug? This is the topic, the characteristics we discussed. Now the second is the topic here we are going to discuss in this। Now is the second topic in this, symptoms। अब symptoms क्या आ जाते हैं? Symptoms, what are the various symptoms of drug addiction? अब जो बंदा ड्रग लेता हो, ड्रग एडिक्टर हो, उसमें क्या सिम्टम्स आ जाते हैं? What symptoms are seen? उसमें खेल कूद में इंटरेस्ट नहीं रहता है। आप तो देखा जाता है जो ड्रग एडिक्टर होता है इसमें फिजिकल वीकनेस पाया जाता है। उसमें जो मसल होता है वो टिंडर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और देयर इज अ मेंटल रिटार्डेशन, देयर इज अ साइकी प्रॉब्लम in that person who rely on drugs and have a constantly using that drug। That means he lost the interest towards the sports and games, loss of interest towards sports and daily routine work and in daily routine work। जो बाकी जिम्मेदारी वाली काम होते हैं घर पे, ऑफिस पे या बाकी जगहों पे जो जिम्मेदारी की काम आते हैं, रेस्पॉन्सिबल वर्क होता है, उसमें ये he or she is lagging behind। Who is the drug addictor? He does not now, he or she does not show any more interest towards the games, supporters. Games and supporters need a healthy person। Your muscles should be strong, your bones should be strong, your circulatory system, your heart should function normal, your brain should be should work properly, you should be a mannered one, you should have a good behavior when you take part in the sports games। When you have mental retardation and you have a physical weakness and you besides is a psyche, then you have no chance to participate in the games or supporters। If
if you could not change yourself, it is the symptom, first symptom or thing. Second is the symptom associated with the loss of appetite. Loss of appetite. लॉस ऑफ एपीटाइट, इसकी जो भूख होती है वो मिट जाती है, इसकी भूख नहीं लगती है, ये ज़्यादा खाने के ओर ध्यान नहीं देता। जो हमारा खाने का टाइम टेबल होता है वो इसमें बदलाव आता है। जिस टाइम इसको खाना होता है उस टाइम ये ड्रग लेता हो, और लेट ऑफन देखा गया है जो ड्रग एडिक्शन में, इसमें जो खाने का जो टाइम टेबल रहता है वो ऑटोमेटिकली चेंज आते हैं। ज़्यादा खाने के बढ़कर ये ज़्यादा पसंद करता है टू टेक अ ड्रग simultaneously with regular intervals of time, and have a less attention towards the diet, to have a balanced diet so that to maintain the physical condition। तो इसमें क्या आता है, जब इसकी भूख मिटती है, इसको ये ड्रग लेने से इसकी भूख मिटती है, इसका खाने पीने का ध्यान नहीं रहता है, तो लॉस ऑफ एपीटाइट इज अ weakness in the body parts, his weight, his body weight losses day to day time, and often it is shown in the appetite जो ड्रग एडिक्टर होता है, आमतौर इसका जो स्टमक पार्ट होता है ये वीक पड़ता है, बार बार उल्टियाँ करता है, चक्कर आते हैं। तो इसका ज़्यादा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट रहता है। who a person taking a drug, that is loss of appetite, भूख नहीं होती है, भूख मिट जाती है if someone have a drug addiction। Now here is the, when there is a loss of appetite, there is a loss of body weight, loss of, obviously there is a loss of body weight। इसका जो वजन होता है ये सुकड़ जाता है, ये कमजोर हो जाता है, इसका बॉडी वेट जो नॉर्मल बॉडी वेट होता है उससे भी, बॉडी नॉर्मल वेट से भी कम हो जाता है। अब देखा गया है और एक इसमें चीज, they have an unsteady gait, that means abnormal walking, that means now he is not normally walking, abnormal वॉकिंग, उसमें चलने में बदलाव आते हैं, जैसे मतलब इधर उधर का हिलता डुलता, चलने के दौरान ये हिलता डुलता लगता है, क्यों लगता है कि ये अपने कॉन्शियस से नहीं चल पाता है, मतलब घिसट के चलना, किसी के मदद से चलना, मतलब इसके एबनॉर्मल वॉकिंग होती है, अनस्टेडी गेट एंड क्लम्पसी मूवमेंट आपने देखा होगा, जो ड्रंकर्स होते हैं, जो अल्कोहलिक ड्रंक करते हैं, उनका देखो आप वो कैसे हिलते हैं चलने के दौरान, दे शो द क्लम्पसी मूवमेंट। इसी तरह से इसका भी हाल होता है, क्लम्पसी, इनका ये हाल है क्लम्पसी मूवमेंट्स, दे शो द क्लम्पसी मूवमेंट्स। इसका जो चलने का तरीका नहीं रहता है, जब इसलिए ज़हनी कॉन्शियस नहीं होता है, जब भी ये चलता होगा मतलब इसके बॉडी पार्ट्स में बैलेंस नहीं दिखाई देते हैं, तो हम अजीब व गरीब इसके मोमेंट्स देखते हैं। तो देयर इज आल्सो साइकोलॉजिकल अनस्टेबिलिटी, जहनी तौर पे ये ठीक नहीं होता है, ऑफनली देखा गया साइकोलॉजिकली अनस्टेबल, साइकोलॉजिकली भी ये अनस्टेबल होता है, मतलब ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं होता है, क्योंकि ऑफन हमने देखा गया जो ड्रग्स होते हैं, जो हम रेगुलर, जो पर्सन रेगुलर एडिक्टर रेगुलर मोड में लेता है, तो ऑफन ये देखा गया है आमतौर इनका जो टारगेट अफेक्टेड सिस्टम रहता है, दैट इज द नर्वस सिस्टम, सो दैट these नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 4 से लेकर नंबर 6 तक ये एसोसिएट होते हैं नर्वस सिस्टम के साथ,
नर्वस सिस्टम के साथ एसोसिएट होता है। When the nervous system is affected, then these abnormalities, these symptoms are seen in a drug addictor. Now, why adolescents are more prone to the substance abuse? मतलब ज़्यादातर हम देखते हैं इस ड्रग एडिक्शन का शिकार कौन होते हैं? दे आर द एडोलसेंट, जिनका एज होते हैं, ग्रोइंग एज होते हैं, अभी वो नादान होते हैं, नासमझ होते हैं, and they take this drug for their enjoyment, to hide their emotions, anxiety, depression, stress, and they are taking these drugs these days. It becomes a modern fashion among the youngsters to have a drugs for their fun, to have a drug for their enjoyment, to enjoy their lives, but this is not at all ensured. Now, in this way, why adolescents become more prone to their drug addiction? It is here the question. Adolescents are more prone to substance abuse. That means drug addiction. Why adolescents? Often we have noted that the adolescents are seen in have a substance abuse. Adolescents misuse the drugs, like they are taking the alcohol, tobacco, and for various or complicated reasons. ज़हनी परेशानी होते हैं, एडोलसेंट एज में ही एक अनस्टेबिलिटी होती है इस एडोलसेंट में, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वी हैव बेस्ट वेज, वी हैव बेस्ट मेथड्स, मतलब टू बी फ्री फ्रॉम एनी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इमोशन. मतलब we should not depend on these drugs, and they ultimately degrade our body and lose our precious lives. You should not rely on these drugs. These days, adolescents are seen to take a huge quantity of alcohol, and they are smoking more and more, and other drugs they are using. It is a we can say it is a health cost. Ultimately, our health is affected. These days, adolescents they are not comprehensive in mind what they are doing at this age. They should be aware of various factors. They should have a good company. They should have a they should have a comprehension towards the good steps and the bad steps, among the good things and the bad things, among the good colleagues and the bad colleagues. They should have a comprehension. They should be comprehend towards these factors, and always we should not hide anything by our parents, by our elders. We should be open to free. We should be open to tell to them. We should be open to speak, and we should be open to express themselves towards our teachers, towards our parents, towards our elders. We are still grown up youngsters, and ये देखा जाता है इसमें why adolescents these days it becomes a commercial mafia. As you read newspaper daily, the drug peddlers, drug addictors, they are caught by the police, and there is a lawful act against the drug addictors and the drug mafia, and they have there is a strict punishment towards that act. These days we should be strict individually by means of society and by means of community. We should
should be strict towards the drug mafia. And it is by taking the it is a state of physical and psychological dependence. इसमें क्या होता है, एक एडोलसेंट फिजिकली डिपेंडेंट रहता है इन ड्रग्स पे, और साइकोलॉजिकल तौर पे भी ये ड्रग्स पे बिल्कुल डिपेंडेंट रह जाता है। मीन्स ये एक किस्म का मोहताज रहता है, जिस तरह एक लंगड़ा, एक अंधा, बिल्कुल अंधा एक गाइड, he needs a guide, he needs that person which can help him or her, that blind person, to cross the road. In the same way, that person, in the same way, a drug addict remains totally dependent on that drugs, on these medicines, as he made it a habitual manner. It is a part of that life. It becomes now the part of the life to have a drug regularly and a routine manner. And what is the drug? It is a medicine जिसमें ये एडिक्टर एक फिजिकल तौर पे डिपेंडेंट रहता है और साइकोलॉजिकल तौर पे बिल्कुल डिपेंडेंट रहता है, जैसा एक अंधा या लंगड़ा डिपेंडेंट रहता है दूसरे अवजारों, चीज़ों पे, दूसरे गाइड पे, काफी मेरे लिए मदद कर सके. और देयर इज अ कांस्टेंट एंड रेगुलर यूज ऑफ दीज ड्रग्स. And when any drug addictor, when a person have a regular and constant use of this drug, मैंने अभी कहा कि it is a characteristics now becomes among the drug addictors that he day to day time he increases the doses, he totally now remains dependent on that drug. Now it is a commercial mafia here now, that the persons which deals with these drugs, and they catch a prey in their hands and make money by them. We should not be fooled at all. We should keep our health good and fresh and healthy and strong, and we are the future bodies for the world. And now if it becomes the constant regular use of that drug, then it is very difficult to leave this drug, and we becomes inability to have a personal responsibility. जो हमें जिम्मेदारी है घर संभालना, घर के बड़ों का इज्जत करना, मतलब बहुत सारे जो घर में responsibilities होती है. First of all, we should have a duty, we should have some part of work so that we could earn money and we could have a good income, and we can support our father, mother, brother, sister, we can support our family at all. Then that person is unable to have a personal responsibility, unable in have a personal behavior, बिल्कुल ये बिगड़ जाता है. And now the drug addiction is it is a साइकोएक्टिव. जो ड्रग एडिक्शन होता है, ड्रग एडिक्शन होता है, ड्रग एडिक्शन जो होता है, इट इज अ साइकोएक्टिव, ड्रग. बिल्कुल, ये जो ड्रग एडिक्शन होता है, साइकोएक्टिव ड्रग का होता है, it alter the mood altering, because it alter our mood altering drug, mood altering drug. ये हमारा मूड चेंज करता है, but not forever. Some time it changes our mood. We relax, we feel that ये लगता है we relax, but now we become the calm. It is for small time. After that time, it becomes much more thirst of that drug. Now he becomes much more dependent on that. बस अब ये इकोनॉमिकली भी वीक होता है, फिजिकली भी वीक होता है, और सोसाइटी में भी ज़लील और परेशान हो जाता है. बिल्कुल ये कहीं के लायक नहीं हो जाता है. The drug addiction, all the drug addiction, drugs are the psychoactive drugs. These are the drug addiction is a psychoactive drug which alter the mood, our mood. That means it altering
चेंज, ऑल्टरिंग होता है चेंज, ऑल्टरिंग द एक्टिविटी ऑफ nervous system. What it was? It altered the activity of nervous system. Therefore, it is known as psychoactive drug. All the drugs are the psychoactive drugs. Some part they alter our nervous system. And what in this एक तो nervous systems के साथ जो nerve cells होते हैं वो भी इफेक्ट होते हैं. जो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स हो जाता है उसमें भी थोड़ा बदलाव आता है बाय टेकिंग दैट ड्रग. और जो केमिकल ट्रांसमीटर होता है, केमिकल ट्रांसमिशन होता है उस जो जहाँ पे साइनेप्टिक नोड जहाँ पे होता है नर्व, अगर आपने देखा होगा नर्व सेल्स में होता है एक टर्मिनल एंड उनको कहते हैं साइनेप्टिक नोड्स. साइनेप्टिक नोड्स में निकलता है केमिकल साइनेप्टिक नोड्स, वहां पे केमिकल निकलता है. उस केमिकल को हम कहते हैं कीमोट्रांसमीटर या हम इसको कहते हैं neurotransmitter. What is neurotransmitter? It is a chemical secretion. There is a change in the chemical secretion in the synaptic nodes. There is a gap between the two nerve cells. There is a secretion of chemical, simply chemical कीमोट्रांसमीटर जो केमिकल निकलता है या न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल जो निकलता है उसके निकलने में उसमें एबनॉर्मल सिक्रीशन आ जाती है जो हमारे ब्रेन का जो नॉर्मल एक्टिविटी है, नॉर्मल फंक्शन है वो बिगाड़ देता है. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द हाउ these days adolescent becomes more prone to these substance abuse, which should be aware in every way, in every angle, and in short, you should be a mannered one in your society. Individually, you should represent yourself a good person, and you should always have a good company. It is a big point and important point to mention. We have different types of drugs. We have different types of drugs. Now, what are the various drugs I would like to mention here? We have the types of drugs. We have types of drugs. We have various types of. First one is, you know that I have a certain name, alcohol. Second is it is the addiction, taking the alcohol. Tobacco, having a smoke. Tobacco. It is the tobacco too. It is the drug I have to mention is opioids. Opioids. And fourth one is cannabinoids. Sorry, I have to cannabinoids. And fifth one is the coca alkaloid. Yeah, simply it is known as the cocaine. It is known as cocaine. Name it cocaine or coca alkaloid. These are the certain drugs as often we have an abuse of these drugs: alcohol, tobacco, opioids, cannabinoids, and coca alkaloids, cocaine. Dear students, this is all about today. Different content I discussed here about what are the characteristics of drug addiction and what symptoms of drug addiction is, and what
these days adolescents become more prone to have a substance abuse, that is, they become more prone to the addiction of drug, which should not be. And what are the various types of drugs, following all the various types of drugs. Later on the next lecture we will proceed it there. We will briefly describe these drugs and we proceed this chapter in the next lecture. I hope you understand it. Thank you.